印度伫今年的雨季是落大水雨做大水，地区卡马岛的山区互大水淹了。加上即马资本就是卡马岛生产的小鸡，产量阁减少，地区印度即马卡马岛的计数是起5倍，真侪民众规气不爱食。若餐厅甲素食店伫准备这食材的时嘛，已经先甲卡马岛摕掉。 市场的档啊，红记嘅柑仔米，互人看甲真想要食，也毋过详细看计数，1公斤爱180卢比，差不多是台票69块，是过去计数的4倍到5倍，甲真侪民眾驚到。हम मार्केट में तो टमाटर तो मिल रहे रोज का रोज भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। कल कितने रुपए से खरीदा था? कल खरीदा था 160 रुपये किलो, आज तो 180 रुपये किलो है। 柑仔米是印度美食的重要材料，用要到每3项料理内底都有一个会使用柑仔米，所以需求真悬。也毋过受到极端气候影响，印度今年雨季出现无正常的暴雨，甲做大水，造成国内柑仔米的产地互大水引起，严重影响到产量。加上大水嘛影响到交通运输甲配货。 和原本就是生产小贵的柑仔米，计数直起，批发的计数一粒起3倍到4倍，有的地区甚至是起到5倍。1公斤的柑仔米用要比1公升的汽油更加贵。特别是因为正正起价牛奶甲香料的计数，所以就算政府介入是要稳定物价，用较俗的计数供应柑仔米，也毋过消费者又原无啥兴趣，甚至是规气不爱食。 एक महीने का टमाटर खाना ही छोड़ दिया है। 140 रुपए किलो भाव बिक रहा है, वो भी जो जैसा चाहिए ऐसी क्वालिटी में नहीं आता है और सभी सब्जी का भाव बहुत ज़्यादा है तो इसलिए पब्लिक को बहुत परेशान होती है, महंगाई भी इतनी बढ़ गई है। 因为品质甲成本的问题，包括麦当劳甲Subway等等全球连锁素食餐厅，嘛开始伫沙拉也是其他餐店内底停止使用柑仔米。同时阵为着通膨问题，嘛推出计数佮较低商品来吸引消费者。在印度，民众伫2002年到2023的平均月收差不多是6000台票，加上食素的人口真济，所以相关的蔬菜计数起落落会冲击到政治发展。今年3月，咖喱食材之一的大葱头计数起真雄。 嘛要引起大葱头之乱，甚至是差一撮影响到印度政治甲社会的安定。公视新闻台是董炳耀。